Hello everyone, I'm Swati and today I'm going to discuss the UPSC prelims paper 2022 which was conducted on 5th June. So let's start with our explanation and questions. First, site of Ashoka major rock edicts and their location is given. You have to match them. धौली ओडिशा, इरागुडी आंध्र प्रदेश, जोगड़ा मध्य प्रदेश, कलसी कर्नाटका. यहाँ में करेक्टली मैच बताने हैं तो यहाँ दो पेयर्स करेक्टली मैच हैं. Dholi is in Odisha, this one is correct. Iragudi is in Andhra Pradesh, this one is also correct. This Joguda is in Odisha and Kalsi is in Dehradun. So the answer is B, only two pairs here correct. Second question. Consider the following pairs. Kings and dynasties में दे रखी है. First is Nanuka Chandela, second is Jay Shakti Parmara, third is Nagbhat, second Guja Pratihara, and fourth is Bhoj Rashtrakuta. Now how many pairs given above are correctly match है तो इसका correct answer B है. इसमें दो pairs correct है. नानका founder थे चंडेला डायनास्टी के, जय शक्ति from चंडेला डायनास्टी, नागभट्ट second जो है वो गुजा प्रतिहारा डायनास्टी and भोजा from परमारा डायनास्टी. Number third, which one of the following statement about Sangam literature in ancient South India is correct? Statement A says Sangam poems are devoid of any reference to material culture. B says the social classification of Varna was known to Sangam poet. C says Sangam poems have no reference to warrior ethnic. D Sangam literature refers to magical forces as irrational. So यहाँ पे जो correct statement है वो है B. The social classification of Varna was known to Sangam poet. Question number 4. Yog Vashish was translated into Persian by Nizamuddin Panipat during the reign of A. Akbar, B. Humayun, C. Shah Jahan, D. Aurangzeb. Correct answer is A. Akbar. Next question. The world's second tallest statue in the sitting pose of Ramanuja was inaugurated by the Prime Minister of India at Hyderabad recently. Which one of the following statements correctly represent the teaching of Ramanuja? A. Best means of salvation was devotion. B. Vedas are external, self-existent and wholly authoritative. C. Logical arguments were essential means for the highest bliss. D. Salvation was to be obtained through meditation. इसमें जो correct statement है वो A है, that is the best means of salvation was devotion. Salvation can be obtained through devotion and surrender, ऐसा मानना था, ऐसी teaching थी रामानुजा की. Next, the Prime Minister recently inaugurated the new circuit house near Somnath Temple at Virival. Which of the following statements are correct regarding Somnath Temple? First, Somnath Temple is one of the Jyotirling shrines. Second, a description of Somnath Temple was given by Al-Baruni. Third, Pran Pratishtha of Somnath Temple was done by President Radhakrishnan. Select the correct code. So here the correct one is 1 and 2. First says Somnath Temple is one of the Jyotirling shrines, that is correct. Second, a description of Somnath Temple was given by Al-Baruni is also correct. Third statement is wrong, which says Pran Pratishtha of Somnath Temple was done by President Radhakrishnan. No, the President of India at that time is Rajendra Prasad, who had presided over installation ceremony of Somnath. Which one of the following statement best describe the role of B cell and T cell in the human body? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो डी है. दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Other than those made by humans, nanoparticles do not exist in nature. Second statement, nanoparticles of some metallic oxide are used in manufacture of some cosmetics. Third, nanoparticles of some commercial products which enter the environment are unsafe for humans. Which of the following statement are correct? So here the correct answer is D, यानी second और third statement correct है. Second statement says nanoparticles of some metallic oxide are used in manufacture of some cosmetics, and third says nanoparticles of some commercial products which enter the environment are unsafe for human. ये दोनों statement सही हैं. First one is wrong, which says other than those made by human, nanoparticles do not exist in nature. तो ये गलत statement इसलिए क्योंकि nanoparticles widely exist in nature.
Consider the following statement. DNA barcodings can be a tool too. First, assess the age of plant or animal. B. Second, distinguish among species that look alike. Third, identify undesirable animal or plant material in processed food. तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी है, जो कि आंसर जो है वो डी है. दैट इज़ सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है. दैट इज़ जो डीएनए बारकोडिंग है उसे एज ए टूल यूज़ किया जाता है टू डिस्टिंग्विश अमंग स्पीशीज़ दैट लुक अलाइक एंड आइडेंटिफाई अनडिज़ायरेबल एनिमल और प्लांट मटीरियल इन प्रोसेस फूड. दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं है. दैट डीएनए बारकोडिंग का इस्तेमाल होता है टू असेस द एज ऑफ प्लांट एंड एनिमल. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे तो एक्सप्लेनेशन में क्या है कि डीएनए बारकोडिंग जो होता है वो होता क्या, यूज टू आइडेंटिफाई नोन एंड अननोन स्पीशी on the basis of the pattern of nucleotide arrangement in a fragment of DNA of a particular species. Next, इनमें से कौन सी जो फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉजिंग एसिड रेन. So first is carbon monoxide, second nitrogen oxide, third ozone, fourth sulfur dioxide. Correct answer is second and fourth. Nitrogen oxide और जो sulfur dioxide है वो responsible होते हैं acid rain के लिए. Consider the following statement. Bidi is a large refugee settlement in the northwestern Kenya. Second, some people who fled from the South Sudan civil war live in Bidi. Third, some people who fled from civil war in Somalia live in the Dadaab refugee complex in Kenya. इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर सी है. सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग इसलिए है क्योंकि बिडी रिफ्यूजी सेटलमेंट जो है वो रिफ्यूजी कैंप है इन द नॉर्थ वेस्टर्न युगांडा में, ना कि नॉर्थ वेस्टर्न केनिया में. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. First, Armenia. Second, Azerbaijan. Third, Croatia. Fourth, Romania. Fifth, Uzbekistan. Which of the above members of the Organization of Turkic State, इनमें से कौन से Organization of Turkic State के members हैं? तो आंसर जो है करेक्ट वो सी है. सेकेंड और फिफ्थ करेक्ट है, यानी अज़रबैजान एंड उज़्बेकिस्तान. Explanation says members इसमें टर्की विच इज़ होम टू इट्स जनरल सेक्रेटरीट इन इस्तांबुल. इसके अलावा अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान अलॉन्ग विद द ऑब्जर्वर स्टेटस तुर्कमेनिस्तान एंड हंगरी, यानी दो स्टेट जो दो कंट्रीज़ इनको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया हुआ है, तुर्कमेनिस्तान और हंगरी को. Question 14. Consider the following statement. First, Gujarat has the largest solar park in India. Second, Kerala has a fully solar powered international airport. Third, Goa has the largest floating solar photovoltaic project in India. यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो आंसर जो है बी, सेकंड ओनली. सेकंड स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है. दैट इज़ केरला हैज़ अ फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है. गुजरात हैज़ लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया. नो, इंडिया भादला सोलर पार्क इन राजस्थान. भादला सोलर पार्क इज़ इन जोधपुर इन राजस्थान. Is the largest solar park in the world. And Goa has largest floating solar photovoltaic project in India. Statement wrong है because Telangana has the largest floating solar photovoltaic project in India. And Kerala Kochi International Airport Limited is the first airport in the world that would be running fully on solar power. Question 15. With reference to the United Nations Convention on the Laws of the Seas, consider the following statements. First, a coastal state has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles measured from baseline determined in accordance with the convention. Second, ships of all states, whether coastal or landlocked, enjoy the right of innocent passage through the territorial sea. Third, exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baseline from which the breadth of territorial sea is measured. इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो आंसर डी है. तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट सेकंड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है. आंसर इज डी. Which one of the following statement best reflect the issue with the Senkaku Islands sometime mentioned in the news? A. It is generally believed that they are artificial islands made by a country around South China Sea. B. China and Japan engage in maritime dispute over these islands in East China Sea.
C. Permanent American military base has been set up there to help Taiwan to increase its defense capabilities. D. Though International Court of Justice declared them as no man's land, some Southeast Asian countries claim them. तो ये जो सेंकाकू आइलैंड का इशू है, इसका करेक्ट आंसर इज बी. China and Japan engage in maritime dispute over these islands in East China Sea. ये जो आइलैंड चेन है ये क्लेम की जाती है चाइना, ताइवान, जापान के द्वारा. ये मेड अप ऑफ 5 आइलैंड्स एंड 3 barren rocks covering an area of 7 square kilometers. Consider the following pairs. First, Chad, setting of the permanent military base by China. Second, Guinea, suspension of constitution governed by military. Third, Lebanon, severe prolonged economic depression. Fourth, Tunisia, suspension of parliament by president. How many pairs given above are correctly matched? So correctly matched जो है वो आंसर C है, that is 3 pairs. Consider the following pairs. Region often mentioned in news and countries. Anatolia, Turkey. Amhara, Ethiopia. Cabo Delgado, Spain. Catalina, Italy. So how many pairs here correctly match? Correct answer is B. That is only 2 pairs correct है यहाँ पे statement 3 and 4 wrong दे रखे हैं क्योंकि जो Cabo Delgado है that's a region in Mozambique and Catalina is a region of Spain. With reference to Indian laws about wildlife protection, consider the following statement. First, wild animals are the sole property of the government. Second, when a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected area or outside. Third is apprehension of a protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture or killing. करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो ए इज़ द आंसर. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं. थर्ड इसमें रॉन्ग है क्योंकि जो वर्ड एप्रीहेंशन यूज़ हुआ है तो एप्रीहेंशन ही होना इज़ नॉट अ ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर और किलिंग. दिस ओनली इफ द वाइल्ड एनिमल बिकम्स अ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ और इज डिजीज डिसेबल्ड बियॉन्ड रिकवरी कैन इट बी अलाउड टू कैप्चर किल्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. The Chief Wildlife Warden of the state. This provision is applicable to wild animals listed in Schedule 1st of the Wildlife Protection Act 1972, which includes leopards. Mere apprehension or fear that a wild animal could endanger human life is not a ground for the capture or killing. Question 20. Certain species of which one of the following organisms are well known as cultivators of fungi? A. Ant. B. Cockroaches. C. Crab. D. Spider. Correct answer is A. Ant. 21st. In India, which one of the 3 following compiles information on industrial disputes, closures, retrenchments and layoff in factories employing workers? A. Central Statistics Office. B. Department for Promotion of Industry and Internal Trade. C. Labour Bureau. D. National Technical Manpower Information System. Correct answer is C. Labour Bureau. If a particular area is brought under 5th schedule of the Constitution of India, which one of the following statement best reflect the consequences of it? A. This would prevent transfer of land of tribal people to non-tribal peoples. B. This would create a local self-governing body in that area. C. This would convert that area into a union territory. D. The state having such area would be declared a special category state. Correct answer is A. This would prevent transfer of land of tribal people to non-tribal people. एक्सप्लेनेशन में कि गवर्नर कैन मेक रेगुलेशन फॉर पीस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द शेड्यूल एरिया को लेकर जो रेगुलेशंस बनती है वो गवर्नर बना सकता होता है आफ्टर कंसल्ट करने के बाद ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल से. ये जो रेगुलेशंस होती हैं प्रोहिबिट करती हैं, रिस्ट्रिक्ट करती हैं ट्रांसफ़र ऑफ लैंड. ट्राइबल से नॉन ट्राइबल पीपल्स को ट्रांसफ़र ऑफ लैंड नहीं हो सकता और अमंग मेंबर्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एंड रेगुलेट द अलॉटमेंट ऑफ लैंड टू मेंबर्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स. बी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है वो एक एडवाइजरी बॉडी है, ना कि गवर्निंग बॉडी. क्वेश्चन 24. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. First, the India Sanitation Coalition is a platform to promote sustainable sanitation and is funded by Government of India and World Health Organization. Second, the National Institute of Urban Affairs is an apex body of Ministry of Housing and Urban Affairs in Government of India and provide innovative solution to address the challenges of urban India. Which of the following statement correct? तो दोनों ही statement wrong है, तो answer D है, neither 1 and 2. ISC is a multi-stakeholder platform that brings together the private sector, government, financial institutions, civil society, media,
multilateral experts, etc., to work in sanitation through a partnership model. Statement 2 incorrect है क्योंकि National Institute of Urban Affairs is India's leading national think tank on urban planning and development as a hub for generation and dissemination of cutting-edge research in urban sector. It seeks to provide innovation solution to address the challenges of a fast urbanizing India. Which one of the following has been constituted under Environment Protection Act 1986? A. Central Water Commission. B. Central Groundwater Board. C. Central Groundwater Authority. D. National Water Development Agency. Correct answer is Central Groundwater Authority, जो कि constitute की गई under Environment Protection Act 1986 के तहत. Question number 26. With reference to the United Nations Credential Committee, consider the following statement. First, it is a committee set up by the UN Security Council and works under its supervision. Second, it traditionally meets in March, June, September every year. Third, it assesses the credential of all UN members before submitting a report to General Assembly for approval. Which of the statement are correct? So answer is A, that is only third statement इसमें सही है. Third statement क्या कहती है कि assess the credential of all UN members before submitting a report to the General Assembly for approval. First statement incorrect है क्योंकि United Nations Credential Committee is a committee of United Nations General Assembly. And second statement incorrect है because the Credential Committee is appointed at the beginning of each regular session of General Assembly. Which one of the following statement best describe the Polar Code? A. It is an international code of safety for ships operating in polar waters. B. It is the agreement of countries around the North Pole regarding the demarcation of their territories in the polar region. C. It is a set of norms to be followed by the countries whose scientists undertake research studies in the North Pole and the South Pole. D. It's a trade and security agreement of the member countries of the Arctic Council. So the correct answer is A. It is an international code of safety for ships operating in the polar waters. Question 28. With reference to the United Nations General Assembly, consider the following statements. First, the UN General Assembly can grant observer status to the non-member state. Second, intergovernmental organization can seek observer status in the UN General Assembly. Third, permanent observers in the UN General Assembly can maintain missions at the UN headquarters. So which of the following statement correct है? तो तीनों ही statement correct है. Answer is D. First, second, third, all correct. Number 29. With reference to the Tea Board in India, consider the following statement. First, the Tea Board is a statutory body. 2. It is regulated body attached to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. 3. The Tea Board head office is situated in Bangalore. 4. The board has overseas office at Dubai and Moscow. So, which of the following statement correct? So, first and fourth statement correct है. Answer is D. यानी कि टी बोर्ड इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये करेक्ट है, और द बोर्ड हैज़ ओवरसीज ऑफिस एट दुबई एंड मॉस्को, ये करेक्ट है. टी बोर्ड एक ऑटोनॉमस एंड स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड अंडर टी एक्ट 1953, हेडक्वार्टर इन कोलकाता एंड ऑफिसेज आर लोकेटेड कोलकाता, लंडन, मॉस्को, दुबई. Which of the following best describe the term greenwashing? A. Conveying a false impression that a company's products are eco-friendly and environmentally sound. B. Non-inclusion of ecological environmental cost in the annual financial statement of a country. C. Ignoring the disastrous ecological consequences while undertaking infrastructure development. D. Making mandatory provision for environmental cost in a government project and program. Correct answer is A. Conveying a false impression that a company products are eco-friendly and environmentally sound. Greenwashing is considered as an unsubstantiated claim to deceive consumers into believing that a company products are environment friendly. Next, consider the following statement. First, tight monetary policy of US Federal Reserve could lead to capital flight. Second, capital flight may increase the interest cost of firms with existing external commercial borrowings. 3. Devaluation of domestic currency decreases the currency risk associated with ECBs. So, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आंसर इज ए. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट, ये करेक्ट है. एंड सेकंड, कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्म्स विद एग्जिस्टिंग कमर्शियल बोरिंग्स. Consider the following state: Andhra Pradesh, Kerala, Himachal Pradesh, Tripura. How many of the above generally tea producing state? The correct answer is C, only 3 states.
मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया में जो है वो है वेस्ट बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका एंड अरुणाचल प्रदेश. Next, consider the following statement. First, in India, credit rating agencies are regulated by RBI. Second, the rating agency popularly known as ICRA is a public limited company. 3. Brickwork Ratings is an Indian credit rating agency. So correct statement इनमें से बतानी है. Answer is B. Second और third statement correct है. Second statement कहती है the rating agency popularly known as ICRA is a public limited company. And 3 says Brickwork Rating is an Indian credit rating agency. दोनों statement correct है. First statement wrong क्यों है? वो कहती है कि इंडिया में credit rating agency RBI के द्वारा रेगुलेट की जाती है. statement wrong है. इंडिया में credit rating agency SEBI regulations के द्वारा रेगुलेट होती हैं. With reference to Bank Board Bureau, which of the following statements are correct? First, Governor of RBI is the chairman of Bank Board Bureau. Second, the Bank Board Bureau recommends for the selection of heads for the public sector banks. Bank Board Bureau helps the public sector banks in developing strategy and capital raising plans. Correct code choose करना है. Answer is B. Second और third statement correct है. That it recommend for selection of heads for the public sector banks and helps public sector banks in developing strategy, capital raising plans. This based on the recommendation of Nayak Committee appointed by RBI. जो बैंक बोर्ड ब्यूरो बना था ये on the recommendation of Nayak Committee बना था appointed by RBI. The Union Government in order to revamp this PSBs announced it Bank Board Bureau creation in August 2015 as a part of the 7 points Indradhanush mission to revamp PSBs. This Bank Board Bureau is empowered to select the heads of public sector banks. It also helps PSBs to develop strategy and capital raising plans. Next, with reference to convertible bonds, consider the following statement. First, as there is an option to exchange the bond for equity, convertible bonds pay a lower rate of interest. Second, the option to convert to equity affords the bondholder a degree of indexation to rising consumer prices. दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो दोनों ही करेक्ट है. आंसर इज कंसिडर द फॉलोइंग. एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. सेकेंड, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम. Third, Shanghai Cooperation Organization. India is a member of which of the above? So India is a member of all the three: Asian Infrastructure Investment Bank, Missile Technology Control Regime, Shanghai Cooperation Organization. SCO has 8 member states: China, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan. Missile Technology Control Regime, India became a full member. And Asian Infrastructure Investment Bank members are China, Bangladesh, Brunei, Cambodia, India, Kazakhstan, Kuwait, Laos, Malaysia, Myanmar, Mongolia, Nepal, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Uzbekistan and Vietnam. Next, consider the following statements. First, Vietnam has been one of the fastest growing economies in the world in the recent year. Second, Vietnam is led by multi-party political system. Third, Vietnam economic growth is linked to its integration with global supply chains and focus on exports. Fourth, for a long time, Vietnam low labor costs and stable exchange rate have attracted global manufacturers. Fifth, Vietnam has the most productive e-service sector in the Indo-Pacific region. So, which of these statement correct? C is the answer. First, third and fourth statement correct. First says Vietnam has been one of the fastest growing economies in the world in the recent year. Third, Vietnam economic growth is linked to its integration with global supply chains and focus on export. And fourth says for a long time Vietnam low labor costs and stable exchange rates have attracted global manufacturers. In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation? A. Department of Consumer Affairs. B. Expenditure Management Commission. C. Financial Stability Development Council. D. Reserve Bank of India. तो करेक्ट आंसर जो मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेशन कंट्री में, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है. मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके थ्रू जो सप्लाई है मनी का कंट्रोल किया जाता है. वी नो द टर्म्स रिवर्स रेपो एंड रेपो रेट, जिसके तहत कंट्रोल किया जाता है मनी सप्लाई को. With reference to non-fungible tokens, consider the following statements. First, they enable the digital representation of physical assets. Second, they are unique cryptographic token that exist on blockchain. Third, they can be traded or exchanged at equivalency and therefore can be used as a medium of commercial transaction.
तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है. फर्स्ट दैट दे एनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल assets करेक्ट. सेकेंड दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन. ये दोनों करेक्ट है. Anything that can be converted into digital form can be an NFT. Everything from drawing, photos, videos, music, in-game items, selfies, even a tweet can be turned into an NFT, which can then be traded online using cryptocurrency. Next, consider the following reservoir and state given. First, Ghatprabha, Telangana. Second, Gandhi Sagar, Madhya Pradesh. Third, Indira Sagar, Andhra Pradesh. And fourth, Maithan, Chhattisgarh. नॉट करेक्टली मैच बताने हैं तो इसमें से 3 नॉट करेक्टली मैच है, एक ही सही दे रखा है. गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, बाकी तीनों रॉन्गली मैच हैं. बिकॉज घटप्रभा जो है वो कर्नाटका में है. देन इंदिरा सागर इज़ इन मध्य प्रदेश एंड मैथन इज़ इन झारखंड. नेक्स्ट, in the Government of India Act 1919, the functions of provincial government were divided into reserved and transfer subjects. Which of the following were treated as reserved subject? First, administration of justice. Second, local self-government. Third, land revenue. Fourth, police. So the correct answer is D. First, second and fourth statement correct है. First is administration of justice, second local self government and fourth police. ये सारे reserve subjects में आते थे. इनके अलावा reserve subjects में जो आते थे came under the heading of law and order and those are justice, police, land revenue, irrigation. जबकि जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट होते थे दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन मिनिस्टर्स एंड इसमें आते थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क्स, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड फिशरीज. In medieval India, the term phenom referred to A. Clothing, B. Coins, C. Ornaments, D. Weapons. So correct answer is B. Coins. Consider the following freedom fighters. First, Baron Kumar Ghosh. Second, Yogesh Chand Chatterjee. Third, Rash Bihari Bose. Who of the above was were actively associated with the Ghadar party? So correct answer is D, 3 only, that is Rash Bihari Bose. Ghadar party was an international political movement consisting of expatriate Indians to overthrow the British rule in India. Sohan Singh, Kartar Singh, Abdul Muhammad, Barkatullah and Rash Bihari Bose were the prominent figures in this. Next, consider the following, with the reference to the proposal of Cripps mission, consider the following statement. First, Constituent Assembly would have members nominated by the provincial assemblies as well as princely states. Any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future status. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आंसर बी है, दैट इज़ सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स आने थे नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट थे एंड इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज. विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट. नीति प्रज्ञा परिषद पर्वन अवदान शतका. सो विच ऑफ द अबाउट इन टेक्स्ट? तो आंसर करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट है. विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. हिस्टोरिकल पर्सन एंड नोन एज दे रखे हैं इसमें. आर्यदेव जैन स्कॉलर, दिग्नांगा बुद्धिस्ट स्कॉलर, नाथ मुनि वैष्णव स्कॉलर. हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच हेयर? तो सी आंसर है इसका, 2 पेयर्स करेक्ट है यहाँ पे. आर्यदेव बुद्धिस्ट स्कॉलर, दिग्नांगा बुद्धिस्ट स्कॉलर एंड नाथ मुनि वैष्णव स्कॉलर. With reference to Indian history, consider the following statements. First, Mongol invasion of India happened during the reign of Jalaluddin Khalji. Second, during the reign of Alauddin Khalji, one Mongol assault march up to the Delhi and beside the city. Third, Muhammad bin Tughlaq temporarily lost portion of the northwest of his kingdom to Mongols. इनमें से कौन सी statement correct है? तो second correct है, that is during the reign of Alauddin Khilji, one Mongol assault march up to Delhi and beside the city. ये correct है. First statement wrong है. ये पहला मुगल इन्वेजन जो इंडिया पे हुआ था वो ड्यूरिंग रेन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी हुआ था, ये रॉन्ग है. चंगेज़ खान इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश फॉर द फर्स्ट टाइम. चंगेज़ खान मुगल थे जिन्होंने इल्तुतमिश के टाइम पे पहली बार इंडिया पे इन्वेजन किया था. और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है. मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परेरी लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट किंगडम टू द मोगल्स. ऐसा नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक डिफीटेड मोगल्स एंड ही हैड नॉट लॉस्ट एनी ऑफ द पोर्शन ऑफ हिज किंगडम टू देम. With reference to Indian history, who of the following were known as Kuladaran? A. Arab merchant, B. Kalandars, C. Persian calligraphist, D. Sayyids. Correct answer is D. Sayyids.
With reference to Indian history, consider the following statement. First, Dutch establishment their factories, warehouse on east coast on the lands granted to them by Gajpati rulers. Second, Alfonso captured Goa from Bijapur Sultanate. Third, English East India Company established a factory at Madras on the plot of land leased from the representative of the Vijayanagar Empire. इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. दो करेक्ट स्टेटमेंट है सेकेंड एंड थर्ड, तो करेक्ट आंसर है बी. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है दैट अल्फोंसो कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सल्तनत. एंड थर्ड स्टेटमेंट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश a factory at Madras on the plot of land leased from a representative of Vijayanagar Empire. According to Kautilya's Arthashastra, which of the following are correct? First, a person could be a slave as a result of judicial punishment. Second, if a female slave bore her master's son, she was legally free. Third, if a son born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to the legal status of the master's son. Which of these statement correct? So answer is D. First, second, third तीनों ही statement correct है. यानी कि a person could be a slave as a result of judicial punishment. Second, if a female slave bore her master's son, she was legally free. ये भी correct है. And if a son born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to the legal status of master's son. Climate action tracker which monitor the emission reduction pledges of different countries is A. Database created by coalition of research organizations. B. Wing of International Panel of Climate Change. C. Committee under the United Nations Framework Convention on Climate Change. D. Agency promoted and financed by United Nations Environment Program and World Bank. करेक्ट आंसर क्या है? क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो है, जो मॉनिटर करता है एमिशन रिडक्शन प्लेजेस डिफरेंट कंट्रीज की, वो क्या है? ये एक डेटाबेस है क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. सो आंसर इज ए. क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एनालिसिस है जो ट्रैक करता है गवर्नमेंट क्लाइमेट एक्शंस को, मेजर करता है उनको अगेंस्ट द ग्लोबली एग्री जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट क्लाइमेट एक्शंस को. एम ऑफ होल्डिंग वार्मिंग, पेरिस एग्रीमेंट में क्या था? एम ऑफ होल्डिंग वार्मिंग वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एंड परस्यूइंग द एफर्ट टू लिमिट वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस. A collaboration of two organizations, that's Climate Analytics and New Climate Institute. The CAT has been providing this independent analysis to policymakers since 2009. Next, consider the following statement. First, the Climate Group is an international non-profit organization that drives climate action by building large network and run them. Second, the International Energy in partnership with Climate Group launch a global initiative EP100. Third, EP100 brings together leading companies committed to driving innovation in energy efficiency and increasing competitiveness while delivering on emission reduction goals. Fourth, some Indian companies are members of EP100. फिफ्थ, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज सेक्रेटरीट टू द अंडर 2 कोalition. यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ है. आंसर यानी बी है. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. द क्लाइमेट ग्रुप इज़ एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क्स एंड रन देम. थर्ड स्टेटमेंट कहती है जो कि करेक्ट है, EP100 brings together leading companies committed to driving innovation in energy efficiency and increasing competitiveness while delivering on emission reduction goals. एंड फोर्थ करेक्ट है कि some Indian companies member हैं EP100 के. ये 3 स्टेटमेंट करेक्ट है. यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है. वो रॉन्ग क्यों है? क्योंकि जो EP100 ग्लोबल इनिशिएटिव है वो किसके द्वारा लीड किया जा रहा है? वो एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट क्लाइमेट ग्रुप के द्वारा लीड किया जा रहा है, जहाँ पे 120 एनर्जी स्मार्ट बिजनेसेस जो हैं वो एक साथ आएंगे एंड दे विल मेजर एंड रिपोर्ट ऑन एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट्स. Next, if rainforest and tropical forest are the lungs of the earth, then surely wetland function as a kidney. Which of the following functions of wetland best reflect the above statement? A. The water cycle in wetlands involves surface runoff, subsoil percolation and evaporation. B. Algae from the nutrient base upon which fish, crustaceans, mollusks, bird, reptiles, mammals thrive.
C. Wetland plays a vital role in maintaining sedimentation balance and soil stabilization. D. Aquatic plants absorb heavy metals and excess nutrients. Correct answer is D. Aquatic plant absorb heavy metal and excess nutrients. Next, in the context of an WHO air quality guideline, consider the following statement. First, the 24-hour mean of PM 2.5 should not exceed 15 microgram per meter cube. An annual mean of PM 2.5 should not exceed 5 microgram per meter cube. Second is, in a year, the highest level of ozone pollution occurred during the period of inclement weather. Third, PM10 can penetrate the lung barrier and enter the bloodstream. Fourth, excessive ozone in the air can trigger asthma. यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जो कि है बी, दैट इज फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है. Next question. With reference to Gucci sometime mentioned in news, consider the following statements. First, it is a fungus. Second, it grows in some Himalayan forest areas. Third, it is commercially cultivated in Himalayan foothills of northeastern India. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आंसर है सी, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है. गुच्ची जो है वो एक फंगस है, ग्रो होती है सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज़ में. थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये कमर्शियली कल्टीवेट होती है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, जो कि रॉन्ग है. इसे ग्रो किया जाता है हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर में. नेक्स्ट, with reference to polyethylene terephthalate, the use of which is so widespread in our daily lives, consider the following statement. First, its fibers can be blended with wool and cotton fibers to reinforce their properties. Second, containers made of it can be used to store any alcoholic beverage. Third, bottles made of it can be recycled into other products. Fourth, articles made of it can be easily disposed of by incineration without causing greenhouse gas emission. यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी? इट्स फाइबर कैन बी ब्लेंडेड विथ वूल एंड कॉटन फाइबर्स टू रेनफोर्स देयर प्रॉपर्टी. और थर्ड स्टेटमेंट थी बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकिल इनटू द अदर प्रोडक्ट्स. ये दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी आंसर ए है. सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कंटेनर मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू स्टोर एनी एल्कोहलिक बेवरेज. ये रॉन्ग है बिकॉज एल्कोहल विल लीच प्लास्टिक. एंड फोर्थ स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है, आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजीली डिस्पोज बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन. ऐसा नहीं, अगर हम इसे बर्न करेंगे तो इससे टॉक्सिक ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होंगी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड? ए गोल्डन माशीर, बी इंडियन नाइटजार, सी स्पूनबिल, डी वाइट इबिस. सो इनमें से कौन सी बर्ड नहीं है? तो ए स्टेटमेंट है गोल्डन माशीर. Which of the following are nitrogen fixing plants? First, alfalfa. Second, amaranth. Third, chicken pea. Fourth, clover. Fifth, purslane. Sixth, spinach. तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ए है. फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो वो हैं करेक्ट है. Biorock technology is talked about in which one of the following situations? A. Restoration of damaged coral reef. B. Development of building material using plant residue. C. Identification of areas for exploration of shale gas. D. Providing salt licks for wild animals in forest and protected areas. तो जो बायोरॉक टेक्नोलॉजी है वो किस कंटेक्स्ट में है? ये रेस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ्स के उसमें किया जाता है इसका इस्तेमाल. यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है इसमें हम कोरल रीफ की रेस्टोरेशन करते हैं बाय यूटिलाइजिंग low voltage electricity to improve the health and growth of corals and marine organism. यहाँ पे small amount electric current का पास किया जाएगा through electrodes in the water. Next, the Miyake method is well known for the A. Promotion of commercial farming in arid and semi-arid areas. B. Development of garden using genetically modified flora. C. Creation of mini forest in urban areas. D. Harvesting wind energy on coastal areas and on sea surface. So this Miyake method is used for, well known for, mini forest in urban areas. जैसे create किए जाते हैं mini forest urban areas में. Creation of mini forest urban areas इसमें किया जाएगा. And the method involve planting 2 to 4 trees per square meter उगाए जाते हैं. And they grow in 2 to 3 years में grow कर जाते हैं. They are self-sustaining. Next, consider the following. First, Arogya Setu. Second, Covin. Third, DigiLocker. Fourth, Diksha. Which of the above are built on top of open source digital platforms?
यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों ही करेक्ट है। सो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट अलाउ एक्सेस टू इट्स सोर्स कोड टू एनी अदर यूज़र और डेवलपर। इसके कॉन्ट्रास्ट में होते हैं क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, विच इज़ अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर दैट रिजर्व राइट ओनली टू ऑथराइज इंडिविजुअल। With reference to Web 3.0, consider the following statements. First, Web 3.0 technology enables people to control their own data. Second, in Web 3.0 world, there can be a blockchain-based social networks. Third, Web 3.0 is operated by users collectively rather than a corporation. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट आंसर डी है। With reference to software as a service, consider the following statements. First, SaaS buyers can customize the user interface and can change data fields. Second, SaaS users can access their data through their mobile devices. Third, Outlook, Hotmail, and Yahoo Mail are all the forms of the SaaS. Which of the these statements given above are correct? So answer is D. First, second, third तीनों ही correct है. Next, which one of the following statement best reflect the idea behind the fractional orbital bombardment system often talked about in media? A. A hypersonic missile is launched into space to counter the asteroid approaching the Earth and explode it in space. B. A spacecraft lands on another planet after making several orbital motions. C. A missile is put into a stable orbit around the Earth and deorbits over a target on the Earth. D. A spacecraft moves along a comet with the same speed and places a probe on its surface. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो सी है, दैट अ मिसाइल इज पुट इनटू अ स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड deorbits over a target on the Earth. Now see the explanation part. A fractional orbital bombardment system is a warhead delivery system that uses a low Earth orbit towards its target destination. Just before reaching the target, it deorbits through a retrograde engine burn. The idea behind this FOBS is a warhead is put into a stable orbit and it deorbits over the target. If the target and launch position is lined up and warhead keeps going round, it will complete a circle. Obviously, with the Earth moving during this, it is more of a spiral than a ring, but the horizontal movement is countered in such a way that the warhead still goes over the target. Which one of the following is the context in which the term qubit is mentioned? A. Cloud services. B. Quantum computing. C. Visible light communication technologies. D. Wireless communication technologies. तो जो क्यूबिट टर्म है ये किसके कंटेक्स्ट में यूज़ होती है? दैट इज़ बी, क्वांटम कंप्यूटिंग. Consider following communication technologies. First, closed circuit television. Second, radio frequency identification. Third, wireless local area network. Which of the above are considered short range devices and technology? तो करेक्ट आंसर इज़ डी. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों ही शॉर्ट रेंज डिवाइस और टेक्नोलॉजीज़ है. मतलब क्लोज सर्किट टेलीविजन भी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एंड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. नाउ सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट. शॉर्ट रेंज डिवाइस आर radio devices that offer a low risk of interference with other radio services, usually because their transmitted power and hence their range is low. The definition short range device may be applied to many different type of wireless equipments, including the various forms of access control, alarms, movement detector, closed circuit television, etc. Next question. Consider the following statements. First, biofilms can form on medical implants within human tissues. Second, biofilms can form on food and food processing surfaces. Third, biofilms can exhibit antibiotic resistance. So, which one of the following correct statement जो है correct है? That is D. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों ही करेक्ट है. मतलब बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज़. बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसेस. बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. बायोफिल्म्स होता क्या है? बायोफिल्म्स आर अ कलेक्टिव ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन ग्रो ऑन मेनी डिफरेंट सर्फेसेस. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट फॉर्म बायोफिल्म्स इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटिस्ट. नेक्स्ट, consider following statement in respect of probiotics.
First, probiotics are made of both bacteria and yeast. Second, the organisms in probiotics are found in food we ingest, but they do not naturally occur in our gut. Third, probiotics help in digestion of milk sugar. Which of these statement above is are correct? So correct answer C. First and third statement correct है. First statement क्या कहती है? Probiotics are made of both bacteria and yeast. This one is correct. And third, probiotics help in digestion of milk sugar. ये correct है. Next, in the context of vaccines manufactured to prevent COVID-19 pandemic, consider the following statements. First, the Serum Institute of India produced COVID-19 vaccine named Covishield using mRNA platform. Second, Sputnik V vaccine is manufactured using vector-based platform. Third, Covaxin is an inactivated pathogen-based vaccine. Which of these statements given above are correct? So, correct statement second and third. So, answer is B. Second statement, Sputnik V vaccine is manufactured using vector-based platform. ये correct है. And third, Covaxin is an inactivated pathogen-based vaccine. This one is also correct. Next, if a major solar storm reaches the Earth, which of the following are possible effect on Earth? First, GPS and navigation system could fail. Tsunamis could occur at equatorial region. Third, power grids could be damaged. Fourth, intense auroras could occur over much of the Earth. Fifth, forest fires could take place over much of the planet. Sixth, orbits of the satellite could be disturbed. Seventh, shortwave radio communication of aircraft flying over polar regions could be interrupted. यहाँ हमें करेक्ट आंसर बताना है, तो करेक्ट आंसर सी है. फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ ओनली. फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब ये इफेक्ट अगर मेजर सोलर स्टॉर्म रीच करता है अर्थ पे, तो क्या उसका पॉसिबल इफेक्ट रहेगा अर्थ पे? तो पहला, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम फेल हो सकता होता है. तीसरा, पावर ग्रिड कुड भी डैमेज हो सकते होते हैं. फोर्थ, इंटेंस ऑरोरास कुड अकर ओवर मच ऑफ द अर्थ. सिक्स्थ सेज ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट डिस्टर्ब हो सकते होते हैं. एंड सेवेंथ से शॉर्टवेव रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर पोलर रीजन कुड भी इंटरप्ट हो सकती होती हैं. एक्सप्लेनेशन देखिए, इम्पैक्ट ऑफ सोलर फ्लेयर्स ऑन द अर्थ. तो स्पेस डिपेंडेंट सर्विसेज जो होती हैं, सोलर स्टॉर्म कैन हिट ऑपरेशन ऑफ स्पेस डिपेंडेंट सर्विसेज. लाइक जीपीएस पे इफेक्ट आ सकता है, रेडियो एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशंस पे आ सकता है. रेडियो कम्युनिकेशन, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स इंटरफेयर विथ हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन एंड जीपीएस नेविगेशन सिस्टम. Among the following crops, which one is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? A. Cotton, B. Rice, C. Sugarcane, D. Wheat. So correct answer is B. Rice. Methane and nitrous oxide are emitted from conventional and modified rice cultivation systems. System rice intensification of cultivation in which alternate wetting and drying of rice field is practiced results in: first, reduce seed requirement. Second, reduce methane production. Third, reduce electricity consumption. Correct answer is D. First, second, third तीनों ही statement correct है. That system rice intensification of cultivation that in which alternate wetting and drying of rice field is practiced, उसका results क्या होता है? तो that lead to the reduce seeds requirement, reduce methane production and reduce electricity consumption. Which one of the following lakes of West Africa has become dry and turned into a desert? Lake Victoria, B. Lake Fagobin, C. Lake Oguta, D. Lake Volta. करेक्ट आंसर इज़ बी, लेक फागुबीन. दैट लेक फागुबीन जो है वेस्ट अफ्रीका का लेक है जो कि ड्राई हो गया है, टर्न इनटू अ डेजर्ट. नेक्स्ट, कैंडिकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? ए. कावेरी, बी. मंजरा, सी. पेनार, डी. तुंगभद्रा. करेक्ट आंसर इज सी. पेनार. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. पीक एंड माउंटेन्स दे रखे हैं. फर्स्ट, नमचा बैरवा, गढ़वाल, हिमालय. Second, Nanda Devi Kumaon Hills. Third, Nokrak, Sikkim, Himalayas. Which one of the pairs given above is correctly match? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बी, सेकेंड ओनली, यानी कि नंदा देवी कुमाऊं हिल्स करेक्ट है, बाकी रॉन्ग है. नामचा बैरवा जो है दैट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट सेक्शन है हिमालयाज़ का, इन साउथ ईस्ट तिब्बत में है एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया.
जबकि जो नोकरेक है दैट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑन द तुरा रेंज विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू. The term Levant, often heard in news, roughly correspond to which of the following regions? Answer is A, region along the eastern Mediterranean shore. This Levant, the region along eastern Mediterranean shore, roughly correspond to the modern day Israel, Jordan, Lebanon, Syria, and certain adjacent areas. Consider the following. First, Azerbaijan. Second, Kyrgyzstan. Third, Tajikistan. Fourth, Turkmenistan. Fifth, Uzbekistan. Which of the above have borders with Afghanistan? तो करेक्ट आंसर सी है यहाँ पे 3, 4 एंड 5 ओनली. 3 दैट इज़ अफगानिस्तान से कौन कौन बॉर्डर करता है, तो यहाँ पे तजाकिस्तान करता है, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान करता है. अफगानिस्तान एक कम्प्लीटली लैंडलॉक्ड कंट्री है and it remain most poorly surveyed areas of the world. It is bounded by east and south में पाकिस्तान बॉर्डर कर रहा है, वेस्ट में ईरान, नॉर्थ में सेंट्रल एशियन स्टेट ऑफ तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, and it also has a short border with the Xinjiang province of China. With reference to India, consider following statement. First, monazite is a source of rare earths. Second, monazite contains thorium. Third, monazite occurs naturally in the entire Indian coastal sands in India. Fourth, in India, government bodies only can process or export monazite. So, which of these statement correct? Answer is B. First, second, and fourth. First says monazite is a source of rare earth. Correct. Second, monazite contains thorium. Correct. Fourth, in India, government bodies only can process or export monazite is also correct. This monazite question was also asked by UPSC in 2012 prelims, and that acid rain during that question asked in 2013 or somewhere 15. So it's always advisable to go through the past papers of the UPSC. Next, in the northern hemisphere, the longest day of the year normally occurs in the A, first half of the month of June, B, second half of the month of June, C, first half of the month of July, D, second half of the month of July. So नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो लॉन्गेस्ट डे अगर होता है वो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून में होता है, समवेयर 21-22 जून को होता है. Consider the following pairs: wetlands and their lake location. First, Hokra wetland Punjab. Second, Renka wetland Himachal Pradesh. Third, Rudrasagar lake Tripura. Fourth, Shashtam Kota lake Tamil Nadu. तो इनमें से कौन से करेक्टली मैच हैं? यहाँ पे दो पेयर्स करेक्टली मैच हैं, दैट इज़ रेणुका हिमाचल प्रदेश एंड रुद्रसागर त्रिपुरा. हकरा वेटलैंड इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर एंड शष्टम कोटा लेक इज़ इन केरला. Consider the following statement. First, pursuant to the report of H. N. Sanyal Committee, the Contempt of Court Act 1971 was passed. Second, the Constitution of India empowers the Supreme Court and the High Courts to punish for the contempt of themselves. Third, the Constitution of India defines civil contempt and criminal contempt. Fourth, in India, the Parliament is vested with the power to make the laws on contempt of the court. So, choose the correct statement. Correct answer is B, that is first, second and fourth statement correct है. First says pursuant to the report of H. N. Sanyal Committee, the Contempt of Court Act 1971 was passed. Correct. Second, the Constitution of India empowers Supreme Court and High Court to punish for the contempt of themselves. Correct. Fourth says in India the Parliament is vested with the power to make the laws on the contempt of the court is correct. Third statement is wrong, which says the Constitution of India defines civil contempt, criminal contempt. So the Constitution of India does not define the civil contempt and the criminal contempt. With reference to India, consider the following statements. First, government law officers and legal firms are recognized as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocates. Second, Bar Council have the power to let down the rules relating to the legal education and recognition of law colleges. तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो सेकेंड है, यानी आंसर बी है. बी सेकेंड ओनली जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, दैट इज़ बार काउंसिल हैव द पावर टू लेट डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन and recognition of the law colleges. Consider following statement. First, a bill amending the constitution requires a prior recommendation of the President of India.
Second, when a constitutional amendment bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his or her assent. Third, a constitutional amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha by special majority, and there is no provision for joint sitting. सो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है. सेकेंड कहती है व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज और हर असेंट. तो प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ता है इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. एंड थर्ड सेज कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है दैट मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द लोकसभा राज्यसभा से, दोनों से पास होना चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी से. एंड जॉइंट सिटिंग का इस केस में कोई प्रोविजन होता नहीं है. ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं. फर्स्ट गलत है. अ बिल अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती है प्रेसिडेंट के इन केस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. Consider the following statement. First, the Constitution of India classify the minister into 4 ranks: Cabinet Minister, Minister of State with independent charge, Minister of State and Deputy Minister. Second, the total number of minister in the Union government, including the Prime Minister, shall not exceed 15% of the total number of members in the Lok Sabha. इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो बी आंसर है, दैट इज़ सेकेंड वन करेक्ट है. यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर हैं यूनियन गवर्नमेंट में इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर को मिला के वो एक्सीड नहीं करने चाहिए 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा. फर्स्ट स्टेटमेंट जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लासीफाई करता है मिनिस्टर को ये 4 रैंक्स में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है. सो दिस मेक्स दिस स्टेटमेंट रॉन्ग. Which of the following is our exclusive powers of the Lok Sabha? First, to ratify the declaration of emergency. Second, to pass a motion of no confidence against the Council of Ministers. Third, to impeach the President of India. Select the correct code. तो आंसर जो है बी है, दैट इज़ सेकेंड ओनली. टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दिस इज एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ लोकसभा. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट वन इज़ रॉन्ग. टू रेटिफाई डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी के एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है लोकसभा का, ऐसा नहीं है. दोनों हाउसेस की वो जो होती है कंसेंट चाहिए होती है. यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में देखें तो इफ़ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट वेयर बाय द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी देयर ऑफ इज थ्रेटन whether by war or external aggression or armed rebellion, he may by proclamation made a declaration to that effect in respect of the whole of India or a part or such part of the territory, and every proclamation issued under this article shall be laid before each house of parliament के आगे रखी जाएगी. स्टेटमेंट थर्ड गलत है कि लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर है टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. दोनों जो पार्लियामेंट है वो चार्जेस इफ पार्लियामेंट दीज चार्जेस शुड बी मेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, तो दैट शुड बी साइंड बाय 1/4 ऑफ द मेंबर्स. पहले उसे साइन करेंगे जिस हाउस में जो चार्जेस हैं फ्रेम किए गए हैं. फिर प्रेसिडेंट को 14 डेज़ का नोटिस दिया जाता है. फिर इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास किया जाएगा बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस. इट इज़ सेंट, पहले उस इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस जहाँ पे वो सस्टेन किए गए, इनिशिएट किया गया. फिर दूसरे हाउस में भेजा जाता है टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस. देन प्रेसिडेंट का राइट रहता है टू अपीयर ड्यूरिंग सच इन्वेस्टिगेशन. एंड अगर अदर हाउस भी सस्टेन करेगा चार्जेस, पास करेगा इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, तो प्रेसिडेंट स्टैंड रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेजोल्यूशन इज सो पास्ड. With reference to anti-defection law in India, consider the following statement. First, the laws specify that a nominated legislature cannot join any political party within 6 months of being appointed to the House. Second, the law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a defection case. तो दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आंसर बी है, सेकेंड करेक्ट है कि ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डिसाइड करना होता है डिफेक्शन केस. इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है. फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है. फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं हाउस के वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं इफ़ दे जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द हाउस. अगर 6 महीने के बाद अगर वो ज्वाइन करते हैं किसी पार्टी को तब वो डिस्क्वालीफाइड होते हैं. तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इस वजह से रॉन्ग है. Consider the following statement. First, Attorney General of India and Solicitor General of India are the only officers of the government who are allowed to participate in the meeting of the Parliament of India.
Second, according to the Constitution of India, Attorney General of India submit his resignation when government which appointed him resigns. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर द डी है, नीदर वन नॉर टू. जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग इसलिए है कि उसमें कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो अलाउड किए जाते हैं टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. तो मीटिंग्स में अटॉर्नी जनरल किया जाता है, मिनिस्टर्स किए जाते हैं, ना कि सॉलिसिटर जनरल. सेकेंड स्टेटमेंट गलत इसलिए है कि इसमें कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल अपना रेजिग्नेशन टेंडर करेंगे जबकि गवर्नमेंट जो है वो रिज़ाइन करती है. दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये एक कन्वेंशन डेवलप हुई है, तो दैट मेक्स दिस स्टेटमेंट रॉन्ग. With reference to the writs issued by the court in India, consider the following statement. First, mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty. Second says mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. And third say any public-minded person can be a petitioner to move the court to obtain the writ of quo warranto. सो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है. फर्स्ट सेज मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज़ इंटरेस्टेड विथ अ पब्लिक ड्यूटी. एंड थर्ड सेज एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ द क्यू वारंट. ये दोनों स्टेटमेंट सही है. सेकेंड वन गलत है, दैट इज़ मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी. मैंडामस रिट जो है उसमें क्या दिया, उसके तहत क्या होता है कि इट लिटरली मीन्स वी कमांड. It is a command issued, जो mandamus writ है, it is a command issued by the court to a public official asking him to perform his official duty that he has failed or refused to perform. It can also issued against any public body, a corporation, an inferior court, a tribunal or government for the. With reference to Ayushman Bharat Digital Mission, consider the following statement. First, private and public hospital must adopt it. Second, as it aims to achieve universal health coverage, every citizen of India should be a part of it ultimately. Third, it has seamlessly portability across the country. Which one of these statements correct over here? तो इसमें जो correct है वो है B. आंसर जो है B है, that is third statement यहाँ पे correct है, that it has seamless portability across the country. With reference to Deputy Speaker of Lok Sabha, consider the following statement. First, as per the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, the election of Deputy Speaker shall be held on such date as the Speaker may fix. Second, there is a mandatory provision that election of candidate as Deputy Speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party. Third, the Deputy Speaker has the same power as the Speaker when presiding over the sitting of the House and no appeal against his ruling. Fourth, the well-established parliamentary practice regarding appointment of Deputy Speaker is that the motion is moved by the Speaker and duly seconded by the Prime Minister. तो correct statements में से देखनी है तो first and third correct statement है. That and the second one is wrong. There is a mandatory provision that election of candidate as Deputy Speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party. ये जो था ये convention ये अप टू द 10th लोकसभा तक तो बोथ द स्पीकर डिप्टी स्पीकर रूलिंग पार्टी से होते थे. सिंस 11th लोकसभा एक कंसेंसस डेवलप हुआ है, ही स्पीकर कम्स फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एंड द पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर गोज टू द मेन ऑपोजिशन पार्टी. Rapid financing instrument and rapid credit facility are related to the provision of lending by which one of the following: A. Asian Development Bank, B. International Monetary Fund, C. United Nations Environment Program Finance Initiative और D. World Bank. तो ये जो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी है ये रिलेटेड है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. सो आंसर इज B. With reference to the Indian economy, consider the following statement. First, an increase in nominal effective exchange rate indicates the appreciation of rupee. Second, an increase in the real effective exchange rate indicates an improvement in trade competitiveness. Third, an increased trend in domestic inflation relative to inflation in other countries is likely to cause an increase divergence between NEER and REER. Which of the above statement correct? तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट द एप्रिसिएशन ऑफ रुपी. दिस वन इज करेक्ट एंड थर्ड वन इज करेक्ट.
यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है कि REER दैट इज़ रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एन इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, ये जस्ट इसका रिवर्सल होता है। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपेंसिव हो जाता है और इम्पोर्ट चीपर हो रहा है, तो दैट इज़ अफेक्टिंग द ट्रेड, एडवर्सली अफेक्टिंग द ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। वी आर एट लॉस ड्यूरिंग दिस टाइम। With reference to the Indian economy, consider the following statement. First, if inflation is too high, Reserve Bank of India is likely to buy government securities. Second, if the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. Third, if interest rate in the US or the European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Which of the following statement given above are correct? So correct answer is B. Second and third statement correct है. फर्स्ट रॉन्ग है, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो RBI से लिक्विडिटी को रिड्यूस करने के लिए कैसे लिक्विडिटी रिड्यूस करेगा मार्केट से? बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू द पब्लिक। पब्लिक को सेल की जाती है, लिक्विडिटी ईज करनी है तो पब्लिक को सेल की जाएंगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. Answer is B, that is 2 and 3 correct. Next, with reference to the G20 common framework, consider the following statement. First, it is an initiative endorsed by the G20 together with the Paris Club. Second, it is an initiative to support low-income countries with unsustainable debt. Which of the statement given above is correct? So, answer is C. Both 1 and 2 दोनों statement correct है. That it is an initiative endorsed by G20 together with the Paris Club and it support low-income countries with unsustainable debt. With reference to the Indian economy, what are the advantages of inflation index bond? First, government can reduce the coupon rates on its borrowing by way of IIBs. Second, this IIBs provide protection to the investor from uncertainty regarding inflation. Third, the interest rate received as well as capital gains on IIBs not taxable. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है. फर्स्ट इज गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट ऑन इट्स बोरोइंग बाय द वे ऑफ IIBs, दैट इज करेक्ट, एंड IIBs provide protection to the investor from uncertainty regarding inflation is also correct. A is the answer. With reference to foreign owned e-commerce firms operating in India, which of the following statement is correct? First, they can sell their own goods in addition to offering their platform as marketplaces. Second, the degree to which they can owe big sellers on their platform is limited. यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो सी आंसर है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. Which of the following activities constitute real sector in the economy? First, farmer harvesting their crops. Second, textile mills converting raw cottons into fabrics. Third, commercial banks lending money to a trading company. Fourth, a corporate body issuing rupee-denominated bonds overseas. Correct answer is A, first and second. These are real sectors in the economy. Farmer harvesting their crop, textile mills converting raw into fabrics. Which one of the following situation best reflect indirect transfer often talked about in media recently with reference to India? A, an Indian company investing to a foreign enterprise and paying taxes to the foreign country on the profit arising out of its investment. B, a foreign company investing in India and paying taxes to country of its base of the profit arising out of its investment. C, an Indian company purchases tangible assets in a foreign country and sells such assets after their value increases and transfer the proceeds to India. D, a foreign company transfers shares and such shares derive their substantial value from the assets located in India. So correct answer is D. Next, with reference to expenditure made by an organization of a company, which of the following statement are correct? First, acquiring new technology is capital expenditure. Second, debt financing is considered capital expenditure while equity financing is revenue expenditure. यहाँ हमें करेक्ट कोड बताना है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. जब हम कोई नई टेक्नोलॉजी एक्वायर करते हैं तो वहाँ पे असेट जनरेट होता है. असेट जनरेट है इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया कि डेट फाइनेंसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर है जबकि इक्विटी फाइनेंसिंग इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो डेट फाइनेंसिंग एंड वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही, जबकि इक्विटी फाइनेंसिंग जो है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है. इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है और फर्स्ट ही करेक्ट है. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो ए है, दैट इज़ 1 ओनली. नेक्स्ट, with reference to the Indian economy, consider the following statement. First, a share of household saving, financial saving, goes towards government borrowing. Second,
Dated securities issued at market-related rates in auctions form a large component of internal debt. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आंसर सी है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 1 and 2. Consider the following statement. High clouds primarily reflect solar radiation and cool surface of the earth. Second, low clouds have a high absorption of infrared radiation emanating from the earth's surface and thus cause warming effect. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो दोनों ही करेक्ट नहीं है, आंसर यहाँ पे डी है, नीदर 1 nor 2. हाई क्लाउड्स जो होते हैं दे आर ऑफन थिन होते हैं, डू नॉट रिफ्लेक्ट, वो ज़्यादा करते नहीं है, दे रेडिएट लेस एनर्जी इनटू द स्पेस दैन द लोअर वार्मर क्लाउड्स. देयरफॉर हाई क्लाउड्स वर्क टू ट्रैप more energy than the low clouds. Second, low clouds are often quite thick and reflect a lot of sunlight back to surface. Low clouds are excellent reflectors, but they don't stop the long wave energy from escaping to space. Therefore, low clouds help to cool the earth.